Okay, so today we start with a new chapter of ecology, which is biodiversity and its conservation. ठीक है? We have already studied organisms and its population, and जिसके बाद आपका जो chapter है इस ecology में, that is biodiversity and its conservation. So सबसे पहले what is biodiversity? Bio obviously means the life, and diversity मतलब कि जितनी भी life forms which are present on earth उनमें कितनी ज्यादा variations present है, and how do we conserve those variations, that is the entire chapter all about, which is the biodiversity and its conservation. So, for the first time, the term biodiversity was actually given by the scientist Rosen. Okay? But the term wasn't popularized by Rosen. सिर्फ जो term biodiversity है, it was given by Rosen, but actually it was popularized. मतलब सब लोगों को introduce किसने किया था? It was done by the scientist or sociobiologist, which who was Edward Wilson. ठीक है? And this was done by him in 1992. जो रोजन है, रोजन ने जो टर्म दी थी बायोडाइवर्सिटी, ही गेव इट इन 1985. ठीक है, तो 1985 में उसने ये टर्म दी थी, बट टिल 1992 no one knew about the term biodiversity, so it was actually popularized to everyone by the scientist Edward Wilson. ठीक है, so if we define biodiversity, जैसे मैंने बोला एकदम सिंपल टर्म्स में, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? इट इज एक्चुअली the different variations in the living organisms. ठीक है, and if we have to give a full-fledged definition of biodiversity, तो वो कैसे explain करेंगे? Biodiversity, it is actually defined as the vast diversity of the species and all the varieties of the life forms which are present on earth. ठीक है, ये सिंपल सी चीज है. ये सिंपल सा जो मतलब है वो बायोडाइवर्सिटी टर्म के अंदर खुद के अंदर ही मेंशन्ड है. अगर हम इस डेफिनेशन को और इलाबोरेट करते हैं, so what can we write? We can write that all these species and varieties, they include the species of microorganisms. मतलब जो भी अर्थ पे लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट हैं, उनकी जितनी भी वेराइटीज हैं या species present है, they all constitute the biodiversity. So they can include the species of microorganisms, algae, fungi, plants, animals on earth in the various habitats and niches of which they are a part. ठीक है, तो जिस भी अर्थ के हैबिटेट में या जिस भी इवन टाइनीस्ट कॉर्नर में जहाँ पे भी ये लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट है, वो सभी के सभी दे कॉन्स्टिट्यूट द बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, और जो बायोडाइवर्सिटी है, अगर हम इनकी टोटल स्पीशीज अगर हम सब ऑर्गेनिजम्स की या सभी लाइफ फॉर्म्स की कैलकुलेट करते हैं, तो इट इज वेरी वेरी ह्यूज. ठीक है, एंड जो ऑलरेडी जो स्पीशीज, टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज आपको पता है, दैट इज ओनली अ वेरी माइन्यूट पार्ट जो एक्चुअल में वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही है. ठीक है, so there's a authority or there's a union which is IUCN. IUCN actually stands for International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. IUCN stands for International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. इसमें एक सिर्फ सिंगल एन है, बट नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज दोनों इसमें आता है. ठीक है, so according to a report by IUCN of 2004, this is a report of 2004, it says that total number of known plant and animal species is slightly more than 1.5 million. ठीक है, मतलब जो ये इन्होंने रिपोर्ट शेयर की थी 2004 में, अभी तक सभी बुक्स में यही रिपोर्ट सर्कुलेट हो रही है. तो उसमें उन्होंने बोला था कि अभी तक जितनी डिस्कवर्ड हो चुकी है बाय द साइंटिस्ट, टोटल नंबर ऑफ द स्पीशीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, it is about more than 1.5 million. ठीक है, so obviously you can understand if 1.5 million species in the entire world, it is a very small number. ठीक है, so इसके बाद में क्या हुआ, जब ये IUCN ने ये नंबर दिया, उसके बाद साइंटिस्ट दे स्टार्टेड वर्किंग अपॉन द डिफरेंट, मतलब उन्होंने खुद का काम स्टार्ट किया, दे स्टार्टेड कैलकुलेटिंग द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज. ठीक है, एंड इसी बीच में ऑब्वियसली हम इंडिया की तो ऑब्वियसली बात करेंगे. तो जो इंडिया है, इंडिया कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 2.4% ऑफ टोटल वर्ल्ड लैंड एरिया. मतलब जो टोटल जो वर्ल्ड है उसका जो लैंड एरिया है, इंडिया उसका 2.4% कॉन्स्टिट्यूट करता है. ठीक है, सो इंडिया के पास एक्चुअली बहुत ही ज्यादा वाइड वेराइटी ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट है. ठीक है, प्लस इंडिया के पास बहुत सारे हॉटस्पॉट्स भी प्रेजेंट हैं, एंड जैसा एज आई सेड, ऑल द साइंटिस्ट दे स्टार्टेड कैलकुलेटिंग द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज विच आर प्रेजेंट ऑन अर्थ. ठीक है,
सो हर कोई साइंटिस्ट अपने अपने टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज दे रहा था, बट जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड एस्टिमेट है दैट इज ऑफ द साइंटिस्ट रॉबर्ट मिल, ठीक है। ये डायरेक्ट नेम से क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट वाज द एस्टिमेट व्हिच वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट रॉबर्ट मिल। So Robert May places the total number of species at about 7 million, and this 7 million estimate it is considered as the most scientifically sound estimate, ठीक है। It is the most stable estimate which is considered by everyone, ठीक है। बाकी के नहीं तो there are so many scientists जो कि they keep on saying that the total number of species which are present in the world they vary between 5 million to 50 million, ठीक है। So which is a very very huge number, and अगर हम इस नंबर को कंसिडर करते हैं तो उसके कंपैरिजन में जितनी अभी डिस्कवर हो चुकी हैं वो उसका बहुत ही स्मॉल नंबर है, ठीक है। अगर इसी मतलब 1.5 मिलियन स्पीशीज जो डिस्कवर्ड है या जो और भी है, इन स्पीशीज में से अगर हम रफली एस्टिमेट देखें तो आउट ऑफ ऑल दी स्पीशीज 70% ऑफ दैट नंबर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एनिमल्स, ठीक है। और उसका प्लांट सिर्फ कितना नंबर अकाउंट करते हैं, ओनली 22%, ठीक है। और बाकी का जितना भी नंबर है दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द प्रोकैरियोट्स, ठीक है। एंड एनिमल्स की भी बात करें तो एनिमल्स के अंदर भी सबसे ज्यादा नंबर पता है किसका है, नंबर सबसे ज्यादा है इंसेक्ट्स का, ठीक है। तो इन सभी डेटाज को एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में एक्सप्लेन किया गया by by due to certain projects, so the new species they were discovered faster, मतलब ये जैसे जैसे नंबर सामने आने लगे तो there were certain projects which were created कि जिससे पता लगे कि हाउ मेनी स्पीशीज आर बीइंग काउंटेड ईच एंड एवरी ईयर, ठीक है। तो जब स्पीशीज काउंट करने के प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए तो इनिशियली इट वाज लाइक कि 15,000 पर ईयर से ज्यादा स्पीशीज दे वर बीइंग काउंटेड, ठीक है। And this was done due to various several projects, several important projects, and one of the most important projects has been the Global Biodiversity Information Facility and Species, and it was done in 2000. Okay, so this global biodiversity has actually given the rough estimate of her key species कितनी है, like it has categorized like into the invertebrates. Invertebrates जो है उनमें किसकी कितनी स्पीशीज है, अनवर्टिब्रेट्स में किसकी कितनी है, एंड देन प्लांट्स में किसकी कितनी स्पीशीज है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, अगर इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो जस्ट लाइक आई सेड कि एनिमल्स के अंदर सबसे ज्यादा सबसे पहले 70% आर टोटली एनिमल्स, एंड उन 70% में भी सबसे मैक्सिमम नंबर किसका है, इंसेक्ट्स का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट, पहले जब साइंटिस्ट व्हेन दे स्टार्टेड वर्किंग, अगर कोई भी वो 10 स्पीशीज डिस्कवर करते थे तो आउट ऑफ 10 स्पीशीज 7 यूज टू बी एनिमल्स, ठीक है। बट जैसे जैसे उनके प्रोजेक्ट्स एंड उनकी स्टडीज इंक्रीज होती गई तो ये जो 7 आउट ऑफ 10 एनिमल स्पीशीज है, सॉरी इंसेक्ट स्पीशीज है, वो इंक्रीज हो गया 7 से 8। मतलब जैसे कि अगर कोई भी वो सपोज 10 स्पीशीज को डिस्कवर करते हैं, so out of those 10 species 8 are going to be insects, ठीक है। so this is the number which means कि insects का number बहुत ज्यादा है। so this is a pie chart which shows the number of invertebrates, ठीक है। so as you can see these are the total, this number is completely totally occupied by the insects, and then उसके बाद में ये जो small small numbers है by the rest of the invertebrates, ठीक है। then इसमें क्या आ रहा है, ये वाला जो है that this is the mollusk, देन दिस इज द क्रस्टेशन, एंड इनके बाद में जितने भी एनिमल ग्रुप्स बचते हैं वो उसको किस में डाले उन्होंने, इस वाले एरिया में डाले, ठीक है। सो द मेजोरिटी एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ invertebrates they are actually insects, then these mollusks, crustaceans and rest of the animal groups are put here, ठीक है। if we talk about vertebrates में you can see fishes occupy half of the number, ठीक है। so जो फिशेज की बायोडाइवर्सिटी है दैट ऑक्यूपाइज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द नंबर, एंड बाकी का जो हाफ है दैट इज ऑक्यूपाइड बाय मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। सो यू कैन ऑब्वियसली गेस फिशेज का नंबर कितना ज्यादा है, ठीक है। सो हाफ तो कंप्लीटली फिशेज ने ऑक्यूपाई कर लिया, देन यहाँ पे दीज आर द मैमल्स, these birds, these are the reptiles, and these are the amphibians, ठीक है। Similarly, they have given the number of plants also, which I will write it down afterwards. And इनमें plants में अगर देखें तो सबसे ज्यादा number it is occupied by fungi and angiosperms, ठीक है। और बाकी के जितने भी है like the algae, lichens, mosses, fawns, ये सभी का number it is very small, ठीक है। So तब तक now you can write it down and then we'll see the pie chart of the plants.
After invertebrates and vertebrates, this is the pie chart which is given by the global diversity to explain the different biodiversity in plants. So the majority of the numbers they are occupied by actually the fungi and the angiosperms, and rest of the plants they include some they are mosses and the others are ferns and allies. Allies matlab they are the plants, they are again vascular plants which resemble to the ferns. ठीक है, मतलब ferns के जैसे ही होते हैं and they belong to the category of vascular plants only, that is the pteridophytes. ठीक है, and बाकी का नंबर किसका होगा? They can include the algae and the lichens. ठीक है, so these are the various pie charts which are given by global biodiversity to show the numbers of the various categories of the organisms. ठीक है, नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज द लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. सो लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में जो एडवर्ड विल्सन है जिसने ये जो बायोडाइवर्सिटी की टर्म को फैमिलियराइज और पॉपुलराइज किया था, ही सेड कि जो ये बायोडाइवर्सिटी के अंदर जो वेरिएशंस प्रेजेंट है, these variations they are not only present at the species level. क्योंकि हम बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो वी आर ऑलवेज सेइंग कि जो स्पीशीज है उनकी कितनी वैरायटी प्रेजेंट है और जो भी लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट है उनकी कितनी स्पीशीज की वैरायटी प्रेजेंट है अर्थ पे. बट एडवर्ड विल्सन सेड कि ये जो वेरिएशंस है बायोडाइवर्सिटी में दे आर नॉट सिंपली प्रेजेंट एट द स्पीशीज लेवल. ठीक है, बट दे आर प्रेजेंट एट ऑल द लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने जब ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन स्टार्ट किया था तब मैंने ये डिस्कस भी किया था लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में. जो सबसे लोवेस्ट लेवल है वो क्या होता है? दैट इज अ मैक्रोमोलिक्यूल. मैक्रोमोलिक्यूल के बाद क्या बनता है? देयर इज अ सेल, देन देयर इज अ टिश्यू. टिश्यू के बाद क्या होता है? ऑर्गन, देन देयर इज ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम क्या बनाता है? ऑर्गेनिज्म. ठीक है, ऑर्गेनिज्म जब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स कंबाइन कर जाते हैं दे फॉर्म अ पॉपुलेशन, देन पॉपुलेशंस कंबाइन टू फॉर्म अ कम्युनिटी एंड देन द इकोसिस्टम, देन द बायोम एंड देन द entire biosphere is formed. So this actually shows कि these are the various levels of organization. ठीक है, तो एडवर्ड विल्सन ने कहा कि ये जो वेरिएशंस है वो सिर्फ और सिर्फ स्पीशीज लेवल पे प्रेजेंट नहीं है, रादर दे आर प्रेजेंट इन ऑल द लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, सो उन्होंने उन लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करने के लिए 3 लेवल्स में उनको मतलब सेपरेट किया, डिफरेंशिएट किया. तो 3 लेवल्स कौन से थे? फर्स्ट वन वाज द जेनेटिक biodiversity, other is the species biodiversity, and the third is the ecological biodiversity. Genetic diversity, genetic मतलब कि genetic means genes and diversity means variations. ठीक है, तो किसी भी की ऑर्गेनिज्म की या डिफरेंट स्पीशीज की बात करें तो उनके जीन्स के अंदर कितनी वेरिएशंस है, दैट ऑल कॉन्स्टिट्यूट्स द जेनेटिक डाइवर्सिटी. इसका सिंपल सा मतलब ये है, अगर इसको डिफाइन करते हैं इट इज एक्चुअली द डाइवर्सिटी इन द नंबर एंड टाइप्स ऑफ जीन्स. अगर मैं जीन्स की बात कर रही हूँ तो जीन्स में वेरिएशंस किस किस मैनर में प्रेजेंट हो सकते हैं. इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ द जीन्स. किसी स्पीशीज के अंदर जीन्स का नंबर ज्यादा हो सकता है, किसी स्पीशीज के अंदर नंबर ऑफ जीन्स कम हो सकता है. ठीक है, एंड टाइप्स ऑफ जीन्स कैन बी ऑल्सो डिफरेंट. ये तो बात हो गई. एंड एट द सेम टाइम जीन्स के साथ हम क्रोमोसोम्स की भी बात करेंगे. ऑब्वियसली जो जीन्स होते हैं क्योंकि दे आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स. ठीक है, तो ये तो बात हो गई व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट स्पीशीज. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट स्पीशीज वी आर कंसिडरिंग द टोटल नंबर ऑफ जीन्स एंड द टोटल टाइप ऑफ जीन्स. ठीक है, बट अगर हम एक ही स्पीशीज के अंदर वेरिएशंस की बात करें तो हाउ विल वी एक्सप्लेन दैट? सो एक ही स्पीशीज की बात करेंगे तो उसमें हम बोलेंगे कि जीन्स और उसके जो एलील्स में जो वेरिएशंस हैं इन सबको अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो दैट all constitutes the genetic diversity, which is the diversity in the number and types of genes and chromosomes present in different species. ठीक है, एंड अगर हम एक ही स्पीशीज की बात करें तो वी विल से द वेरिएशंस इन द जीन्स एंड द एलील्स इन द सेम स्पीशीज. सो दिस ऑल ऑफ दिस इट कॉन्स्टिट्यूट्स द जेनेटिक डाइवर्सिटी. ठीक है, एंड अगर इसके जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया देर अबाउट देर आर सो मेनी 1000 वेराइटीज ऑफ मैंगो. ठीक है, अब ये जो मैंगो है, मैंगो का साइंटिफिक नेम सभी को पता है, मैंगो इज एक्चुअली मैंजीफेरा इंडिका. ठीक है, अब ये जो मैंजीफेरा इंडिका है, ये जो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि देर आर
1000 वेराइटीज ऑफ मैंगो। अब ऐसा नहीं है कि ये जो 1000 वेराइटीज ऑफ मैंगो है इन सब 1000 वेराइटीज का साइंटिफिक नेम डिफरेंट है, नहीं, इन सभी वेराइटीज का ऑल दे हैव अ कॉमन नेम विच इज द मैंजीफेरा इंडिका, बट what is the difference in them, what makes them different? The difference is created due to the uh, total number of the genes and the variations in their alleles, ठीक है। so that is similarly, अगर हम राइस की वेराइटीज की बात करते हैं, इन इंडिया अलोन वी हैव टोटल अबाउट 50,000 वेराइटीज ऑफ राइस, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में राइस का कल्टिवेशन एंड जितना ज्यादा राइस की वेराइटीज इंडिया में प्रेजेंट है वो पूरे वर्ल्ड में कहीं पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। सो अब इसी में एक एग्जांपल को अगर डिटेल में हम स्टडी करते हैं, देयर इज अ मेडिसिनल प्लांट विच इज नोन एज रॉ वुल्फिया वोमिटोरिया, ठीक है। तो ये रॉ वुल्फिया वोमिटोरिया क्या करता है, इसको इसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। हाउ इज द जेनेटिक डाइवर्सिटी प्रेजेंट? दिस मेडिसिनल प्लांट इज एक्चुअली प्रेजेंट इन द डिफरेंट रेंजेस ऑफ हिमालय, ठीक है, हिमालय में प्रेजेंट है। और इसमें डिफरेंस क्या है, इसकी क्या स्पेशलाइजेशन है कि जो इसकी डिफरेंट वेराइटीज हैं, दे शो डिफरेंस इन द पोटेंसी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ केमिकल विच इज नोन एज रेसोपाइन। एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो रॉ वुल्फिया वोमिटोरिया है वो एक अल्कलॉइड सिक्रीट करता है, एक केमिकल सिक्रीट करता है विच इज द रेसोपाइन। एंड सिंस आई रोट हियर दैट इट इज अ मेडिसिनल प्लांट, so this resapine, it is actually used as a medicine to treat various ailments, ठीक है। तो रॉ वुल्फिया वोमिटोरिया में जेनेटिक डाइवर्सिटी कैसे प्रेजेंट है? सपोज वी कंसिडर सम वेराइटीज ऑफ रॉ वुल्फिया वोमिटोरिया, सपोज वो प्रेजेंट है एट द लोअर बेसिस ऑफ हिमालय। सो कोई हम किसी हिमालयन रेंज की बात करें, सपोज देर आर सर्टेन वेराइटीज ऑफ दिस मेडिसिनल प्लांट जो कि लोअर रेंजेस में प्रेजेंट है, एंड जो लोअर रेंजेस में प्रेजेंट है तो उनके उन प्लांट्स के अंदर दे हैव अ लो पोटेंसी एंड ऑल्सो लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेस्टोपाइन, ठीक है। बट एट द सेम टाइम जैसे जैसे वी ट्राई टू गो अबव द हिमालयन रेंजेस, मतलब उसमें ऊपर जैसे जैसे वी स्टार्ट गोइंग अप, वी सी certain varieties of raw wolfia vomitoria which have higher potencies and at the same time higher concentration of रेसापाइन। तो क्वेश्चन क्या आता है कि ये इतना चेंज क्यों आ रहा है? दिस चेंज इज नॉट बिकॉज कि ये दो डिफरेंट स्पीशीज है, नो, ये एक ही स्पीशीज है विच इज रॉ वुल्फिया वोमिटोरिया, बट इनमें डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? द डिफरेंस इज क्रिएटेड ड्यू टू द जेनेटिक डाइवर्सिटी, ड्यू टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स एंड द वेरिएशंस इन देयर एलील्स, ठीक है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेंसी ऑफ रेसापाइन में इनमें डिफरेंस किस वजह से आ रहा है? ड्यू टू द जेनेटिक डाइवर्सिटी। एंड ऑल्सो दिस रेसापाइन, ये सिंस इट इज अ मेडिसिनल प्लांट, व्हाट इज इट यूज्ड फॉर? दिस रेसापाइन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, hypertension, cholera, and even it is used to treat the snake bites, ठीक है। ऑल्सो इसके बाद ये तो हो गया जेनेटिक डाइवर्सिटी। अच्छा, जेनेटिक डाइवर्सिटी को हम और भी क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज दी अल्फा डाइवर्सिटी, ठीक है। दिस जेनेटिक डाइवर्सिटी इज ऑल्सो नोन एज दी अल्फा डाइवर्सिटी। जो सेकेंड लेवल आता है बायोडाइवर्सिटी का, दैट इज द स्पीशीज डाइवर्सिटी, ठीक है। स्पीशीज डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? इसको एक एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन किया है कि इंडिया में जो वेस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट्स दे हैव अ वेरी हाई ग्रेटर एम्फीबियन स्पीशीज एज कंपेयर टू द ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। सो अगर स्पीशीज डाइवर्सिटी को हम डिफाइन करें तो स्पीशीज डाइवर्सिटी इज एक्चुअली द वेराइटी इन द नंबर एंड रिचनेस ऑफ अ स्पीशीज ऑफ अ रीजन। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर रीजन की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी आर टॉकिंग अबाउट वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट्स में इट इज सेड कि जो वेस्टर्न घाट्स है देयर इज हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम्फीबियन स्पीशीज एज कंपेयर टू द ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। सो स्पीशीज डाइवर्सिटी ऑब्वियसली जब भी हम बात करेंगे विल टॉक इट अबाउट ऑन अ पर्टिकुलर रीजनल लेवल, एक बहुत बड़े लेवल पे वी डू नॉट टॉक अबाउट। अच्छा, स्पीशीज डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करने के लिए इसमें दो टर्म्स, छोटी सी टर्म्स दी हैं, विच इज द स्पीशीज रिचनेस एंड स्पीशीज इवननेस। ये दोनों टर्म्स इफ यू जस्ट सिंपली लुक एट देम, इनमें बहुत कम डिफरेंस लगता है, बट दे हैव एक्चुअली अ ग्रेट डिफरेंस। स्पीशीज रिचनेस की बात करें तो स्पीशीज रिचनेस मीन्स नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट पर यूनिट एरिया। अगर एक यूनिट एरिया कंसिडर करते हैं, उस एक यूनिट एरिया में हाउ मेनी स्पीशीज आर प्रेजेंट, दैट कॉन्स्टिट्यूट द स्पीशीज रिचनेस, ठीक है। बट अगर हम बात करते हैं स्पीशीज इवननेस की, इवननेस मतलब कि कौन सी स्पीशीज कितनी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। सपोज
कोई भी हम 4 स्पीशीज कंसिडर करते हैं, सपोज ए बी सी डी, दीज आर द 4 स्पीशीज, ठीक है। सपोज किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ए की स्पीशीज है 5, बी की 2, सी की 4 एंड डी की अगेन सपोज देयर आर अगेन 3, ठीक है। ये तो कोई एक एरिया 1 है, ठीक है। और अगर हम एक एरिया 2 की बात करते हैं तो उसमें अगेन ए की स्पीशीज सपोज देयर आर 10, बी की देयर आर अगेन 1, सी की 2 और डी की देयर आर अगेन 2, ठीक है। तो अगर हम देखें तो एरिया 1 और एरिया 2 में स्पीशीज इवननेस कौन से एरिया में ज्यादा है? इट इज ऑब्वियसली इन द एरिया 1। एरिया 1 में स्पीशीज की इवननेस ज्यादा क्यों है? बिकॉज द स्पीशीज आर मोर और लेस इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे ए की टोटल नंबर 5 स्पीशीज है, बी की 2 है, सी की 4 है, डी की 3, मतलब मोर और लेस दे आर एट द सेम लेवल। बट इफ यू लुक एट द एरिया 2 तो उनके जो स्पीशीज का नंबर है, वो जो स्पीशीज है वो बहुत लेस इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे इसके अंदर स्पीशीज का रिचनेस किसके अंदर ज्यादा है? इस वाले में, क्योंकि ए की देयर आर टोटल 10 स्पीशीज, ठीक है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स, स्पीशीज रिचनेस एंड स्पीशीज इवननेस, ठीक है। अच्छा, अगर स्पीशीज इवननेस की भी बात करते हैं तो उसमें हम ये भी बात कर सकते हैं डोमिनेंस की, कि कोई एक पर्टिकुलर स्पीशीज ज्यादा डोमिनेंट हो सकती है एज कंपेयर टू दी अदर स्पीशीज, ठीक है। सो दिस इज हाउ सो अगर स्पीशीज डाइवर्सिटी को अगर हम को कैलकुलेट करना है तो वी कैन नॉट कंसिडर ओनली वन फैक्टर। मतलब अगर हम सोचे कि हम सिर्फ स्पीशीज रिचनेस को कंसिडर कर सकते हैं या फिर सिर्फ स्पीशीज इवननेस को कंसिडर कर सकते हैं, सो दैट इज नॉट अ गुड क्राइटेरिया। इफ वी हैव टू कैलकुलेट द स्पीशीज डाइवर्सिटी, both the factors have to be equally considered. We cannot remove species richness or species evenness, so they are both equally important, ठीक है। so this is the species diversity। एंड इसके बाद एक और जो थर्ड लेवल बचता है दैट इज द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी तो हम क्या करते हैं, जीन्स लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, तो स्पीशीज डाइवर्सिटी को हम और भी क्या बोलेंगे, वी कॉल इट एज द बीटा डाइवर्सिटी, ठीक है। इसके बाद एक और लेवल बचता है विच इज द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब कि हम बहुत ज्यादा बड़े रेंजेस में अगर कम्युनिटीज में बात करते हैं, सो दैट इज एक्चुअली द ecological diversity. So you can write it down and then we'll start with the ecological diversity. Have you drawn this diagram? Left side हो गया है? अच्छा करो चलो।
See, the third level है, that is the ecological diversity, and it is also known as the gamma diversity. So इसको define कैसे करेंगे? This ecological diversity is considered at very large ecological or the geographical ranges. So it is the diversity which are present in the ranges of communities as represented by the diversity of habitats और इकोसिस्टम्स ओवर अ लार्ज जोग्राफिकल एरिया. ठीक है, ये तो सब उसका डेफिनेशन है. अगर इसका एग्जांपल देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इफ वी कंसिडर द एग्जांपल ऑफ इंडिया एंड नॉर्वे, दीज आर द टू entirely different countries. India has a large variety of ecosystems. Large variety of ecosystems कैसे है? इंडिया के पास में इंडिया हैज गॉट द हिल्स, इंडिया के पास प्लेन्स भी है, हिल्स भी है, ग्रासलैंड भी है, और क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स आर प्रेजेंट इन इंडिया. ठीक है, बट अगर नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे में जो मेन सबसे कॉमन इकोसिस्टम है दैट इज ओनली ग्रासलैंड. ठीक है, सो इफ वी कंसिडर दोनों के अंदर ग्रेटर नंबर ऑफ या ग्रेटर वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम्स किसके पास है, दैट इज विद इंडिया. सो जिसके पास ज्यादा ग्रेटर नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम्स है दैट इज having the greater number of biodiversity. So that is only defined as the ecological diversity. Now the next topic is patterns of biodiversity. तो जो ये diversity का biodiversity है ये पूरे वर्ल्ड में, it is actually not uniform. Some areas have greater biodiversity and some have lesser biodiversity. तो इसको हम बहुत सारे लेवल्स पे स्टडी करते हैं. फर्स्ट इज द लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट. लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट मतलब कि अगर हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ चलते हैं तो स्पीशीज की डाइवर्सिटी वो डिक्रीज होती जाती है. मतलब मैक्सिमम डाइवर्सिटी इज प्रेजेंट एट द इक्वेटर. ठीक है, इट इंक्रीजेज इन द टेम्परेट एरियाज बट इट इज एक्चुअली मैक्सिमम इन द ट्रॉपिक्स. ठीक है, अच्छा, ट्रॉपिकल एरियाज में मैक्सिमम स्पीशीज डाइवर्सिटी क्यों है? इट इज बिकॉज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दे हैव फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस which is useful not only for the speciation, मतलब नए species formation के लिए बहुत helpful है, but also it also supports the variety and the various number of organisms. ठीक है, example Colombia, which is located near the equator, it has total 1400 species of birds, whereas New York कहाँ पे है? New York, it is located at 41 degree north. It has about 105 species of birds, and Greenland, it has only 56 species of birds. Which means कि अगर जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर पोल्स की तरफ चलते चलते हैं तो स्पीशीज डाइवर्सिटी इट एक्चुअली कीप्स ऑन डिक्रीज. ठीक है, सो इट हैज, इसमें आगे और भी लिखने का है, तब तक यू कैन स्टार्ट राइटिंग दिस एंड देन आई विल राइट इट अहेड.
So these are the reasons why there is such greater biodiversity in the tropical areas and lesser and in the other rest of the areas of the whole. Okay? So first reason is that there is speciation, which is the formation of species. Speciation is actually a function of time. So कोई भी area में अगर if new species have to be formed, that area should be undisturbed for millions of years. So the same thing has exactly happened with the tropical areas. Temperate areas में क्या हुआ है, जो temperate areas है, temperate forest में there have been so much changes in the past. ठीक है, there have been so much glacier formation and so much disturbance has already occurred in the past because of which it because of which it killed most of the species of the temperate areas. But nothing such like that has happened with the tropical areas. इसीलिए the tropical areas have such greater biodiversity. Second reason is there is no unfavorable season present in the tropics. All the seasons they are actually favorable. So due to the continued favorable environmental conditions, the tropical areas have greater niche specialization and also diversity. Temperate areas में क्या है, favorable seasons नहीं होते हैं. कभी एकदम से there's rainy season, कभी there's summer season, कभी there's winter season. But जो tropical areas है इसमें वहाँ पे favorable seasons का जो number है that is very much more and lesser weather disturbances, climate disturbances बहुत कम होती है. Third reason is there is more solar energy available in tropics. Obviously, जहाँ पे जिस area में ज़्यादा solar energy available होगी, that would lead to the greater growth of the species. Fourth is the reduced competition in tropics due to favorable environment. जब environment favorable होगा, so there will be abundant food which will be available. Abundant food and abundant resources will be available. तो जब सब चीजें abundance में present होगी, there will be lesser competition between the species. ठीक है? And the last reason is that is the rate of extinction is actually very low in tropics. Obviously, जब favorable season है तो सभी species they will keep on reproducing and leave more and more progenies of their generation and therefore they will have a very low rate of extinction. ठीक है? So these are the various reasons for the greater biodiversity in the tropical areas. इसके बाद इसमें एक और pattern of diversity है which is the species area relationship. वो वी विल कंटिन्यू दैट टुमारो. ठीक है, तो आप अभी के लिए इतना आज के यू कैन डू दिस मच.